So beta, like we are talking about the economic system. One of the economic system is known as जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, और इवन एज वी नो प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम. फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम is owned and controlled by the private sector. Owned and controlled by the private sector. Controlled by the private sector. इस इकोनॉमिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका मेन मोटिव होता है बेटा, क्या मेन मोटिव होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम. जहाँ पे बेटा ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स कंसर्न्ड अबाउट दी वांट्स. प्रोड्यूसर कंसर्न्ड होते हैं किस चीज़ से? कंज्यूमर की ख्वाहिशात से. कंसर्न्ड अबाउट दी वांट से कंसर्न्ड है, अबाउट दी वांट्स रादर देन बेसिक नेसेसिटीज़. रादर देन बेसिक नेसेसिटीज़. रादर देन बेसिक नेसेसिटीज़ से कभी भी कंसर्न नहीं होते, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना और इवन ख्वाहिशात पूरी करना. प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव है. प्रोड्यूसर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कंज्यूमर्स की बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करें. तो जब भी हम कहते हैं ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव, जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. जैसे एग्जांपल दे सकता हूँ बेटा, जैसे यूएई की इकनॉमी है बेसिकली प्राइवेटली कंट्रोल्ड होती है, जो कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में आती है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज बना हुआ है. और ऑब्वियसली बात है वो कंसर्न किससे हैं? लोगों की वांट से कंसर्न है. डिज़ायर फुलफ़िल करना मेजर ऑब्जेक्टिव है. उनका मेजर ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर की डिज़ायर फुलफ़िल करना. उनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कंज्यूमर की बेसिक नेसेसिटीज़ बनाना. तो दिस इज़ द वन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती. ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती है. ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि बेसिकली फॉलो करता है प्राइस मैकेनिज़्म इज़ फॉलोड. प्राइस मैकेनिज़्म is followed in this economic system. Basically price mechanism where the prices are determined. So basically price mechanism is like when prices are determined. Prices जो determine करती हैं वो demand and supply पे करती हैं. Prices are determined. Prices are determined by the forces of demand and supply. Of demand and supply, and price provide a signal to the producer, and prices provide signal to the producer, to the producer to produce goods in a profit maximizing manner. To producer to produce goods, to allocate to produce goods in a profit maximizing manner. In the profit maximizing manner. तो बेटा ये वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स कंसर्न होते हैं, लोगों की वांट से कंसर्न होते हैं, बेसिक नेसेसिटी से कंसर्न नहीं होते हैं. प्रोड्यूसर्स हमेशा कंसर्न होते हैं. ऑब्वियसली बात है लोगों की वांट से कंसर्न है, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बना हुआ है, उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो डेट्स वाई ये वो फर्म्स होती हैं इस इकोनॉमिक सिस्टम में. फर्म विल बी रिस्पॉन्सिव टू चेंज क्विक डिसीजन मेकिंग. बेसिकली जो फर्म्स होती हैं बेटा, फर्म्स विल बी रिस्पॉन्सिव होंगी टू चेंज लाने के लिए बेटा. और ऑब्वियसली बात है जिसको हम कहते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. क्विक डिसीजन मेकिंग होती है इस इकोनॉमिक सिस्टम में. जहाँ पे बेटा हम ये बात करते हैं बेटा इस इकोनॉमिक सिस्टम में, ऑब्वियसली बात है आप प्रोड्यूसर्स जो हैं, कंज्यूमर्स अगर डिमांड ज़्यादा करते हैं तो प्रोड्यूसर को सिग्नल ये मिलता है प्रोड्यूस ज़्यादा करें. कंज्यूमर की अगर डिमांड बढ़ती है तो प्रोड्यूसर को सिग्नल ये मिलता है वो ज़्यादा डिमांड करे, क्योंकि उसके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट बढ़ेंगे. प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलता है
कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर की जब डिमांड ज़्यादा है, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा तो प्रोड्यूसर्स आर द वन, वो अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। प्रोड्यूसर्स अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज़ द रेवेन्यू, ताकि उनके रेवेन्यूज़ क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अगर कंज्यूमर्स डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर ज़्यादा वन, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि दे वांट टू बिकम एफिशिएंट। और ऑब्वियस सी बात है, उनको जब सिग्नल ये मिलेगा, प्रोड्यूसर्स को सिग्नल ये मिल रहा है कंज्यूमर्स आर द वन जो डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया ताकि वो उनको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकें। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बेसिक इकनॉमिक क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक इकनॉमिक क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? बेसिक इकनॉमिक क्वेश्चंस को रिकग्नाइज करता हूँ बेटा। सबसे पहला जो पे बेसिक इकनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं वो कौन सा होता है बेटा? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मैंने बात की, क्या चीज़ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। अगर हम ये बात करें बेटा, प्रोड्यूसर्स यहाँ पे जो प्रोड्यूस करता है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा? गुड एंड सर्विसेज बनाएगा, प्राइवेट गुड्स बनाएगा। बेसिकली प्राइवेट गुड्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है प्राइवेट गुड्स बनाने से इसको प्रॉफिट मिलेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, लाइक हाउ कैसे प्रोड्यूस करेगा? FOPs के ज़रिए। FOPs जो कहते हैं फैक्ट ऑफ प्रोडक्शन को कहते हैं। तो इट्स मीन लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर कैसे प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। FOPs को यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा। Pay for whom to produce, for whom it to be produced, to consumers and those consumer who have the ability to purchase the goods. For whom to produce, that's mean like those consumer who have the ability to purchase the goods. That's mean like consumers के लिए बनाएगा, लेकिन जिसके पास एबिलिटी होगी उसके लिए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर डिमांड करे, प्रोड्यूसर सप्लाई करेगा, तो इसका मतलब मार्केट फोर्सेस यूज़ करते हैं। तो अगर कंज्यूमर्स डिमांड फॉर द गुड, प्रोड्यूसर सप्लाई फॉर द गुड्स। द कंज्यूमर्स इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम, द कंज्यूमर डिमांड फॉर द goods and producers supply for the goods, and producers supply for the goods, producers supply of the goods, because this is the one of the economic system which emphasize the ownership of the resources. Like a producer have the ownership of the resources, emphasize the ownership of the resources, emphasize the ownership of the resources। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, ये वो इकनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रोड्यूसर कंसर्नड है, लोगों की वांट से कंसर्नड है, लोगों की डिज़ायर से कंसर्नड है, बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफ़िल करना नहीं जानता। तो हम ये जानते हैं ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड होते हैं, प्रॉफिट मोटिव है, वांट्स से कंसर्न है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। प्राइस मैकेनिज्म इज़ लाइक प्राइसेस इज़ द वन जो कि डिटरमाइन होती है, प्राइसेस मार्केट फोर्स से जितनी डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर प्राइस सेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाता है? प्राइवेट गुड्स बनाता है प्रोड्यूसर्स। और ऑब्वियसली पर कैसे बनाता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके। दोज कंज्यूमर हु हैव द एबिलिटी, प्रोड्यूसर उसके लिए बनाएगा। कंज्यूमर डिमांड तो करे तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी करेगा। कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करेगा तो प्रोड्यूसर को सिग्नल ये मिलेगा, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ताकि उसके रेवेन्यूज इंक्रीज़ हो। प्रोड्यूसर्स फ्री मार्केट इकनॉमी, जो कि बेसिकली हम ये कंसिडर्ड करते हैं, ये वो इकनॉमिक सिस्टम है जो कि प्रोड्यूसर्स आर द कंसर्न अबाउट दी वांट्स, बेसिक नेसेसिटी से कंसर्न नहीं है। प्रोड्यूसर कहता है भाई मैं सिर्फ लोगों की वांट्स फुलफ़िल करूँगा, क्योंकि उसको इन रिटर्न जो मिलता है वो फ्री मार्केट में रिटर्न मिलता है और किसी इकनॉमिक सिस्टम में रिटर्न नहीं मिलता। तो इट्स मीन लाइक हम ये कह सकते हैं UAE की इकनॉमी है जो कि फ्री मार्केट इकनॉमी है, सिंगापुर की इकनॉमी है, फ्री मार्केट इकनॉमी है। दीज आर द वन ऑफ द इकनॉमी जो फ्री मार्केट इकनॉमी होती है। इन इकनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने से कुछ एडवांटेजेस हैं। बेसिकली एडवांटेजेस हो सकते हैं इन इकनॉमिक सिस्टम को ऑपरेट करने के। दे आर द सम एडवांटेज फॉर दिस इकनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट एडवांटेज अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, since market economy जो कि प्राइवेटली ओन एंड कंट्रोल्ड होती है, मार्केट इकनॉमी अलाउ
the free interplay of supply and demand of supply and demand. It ensure that the most desired goods and services are produced, that most desired goods and services are produced. जितनी ख्वाहिशात वाले गुड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, डिज़ायर गुड एंड सर्विसेज are produced or consumer are willing to pay the highest price for the thing they want the most. Consumers are willing to pay the highest prices, the highest price for the thing they want the most. Even in this economy, there is an efficient allocation of the resources. Because producer is concerned deep about the profit, so that's why producer efficient allocation of the resources. Even consumer may have a variety of goods and choices. यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, consumer may have variety of goods. कंज्यूमर्स के पास बहुत सारी वैरायटी होती है इन गुड्स की, वैरायटी ऑफ गुड्स होती हैं एंड इवन चॉइसेस होती हैं. इवन मैंने बात की बेसिकली दिस इज़ द वन ऑफ द इकनॉमी. मैंने बात की फ्री मार्केट इकनॉमी. मैंने बात की गैस इट रिवॉर्ड द इनोवेशंस लेके आती है ये इकनॉमी और क्रिएटिव न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है. will meet the need of consumer, the need of consumer in better way that existing goods and services और इवन मैंने बात की गाइस प्रोड्यूसर मेन ऑब्जेक्टिव इज अबाउट द प्रॉफिट और दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर is to gain profit. He will never compromise on his quality and consumers will get better quality. कंज्यूमर्स के पास अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है फ्री मार्केट इकनॉमी. एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज होते हैं. फ्री मार्केट इकनॉमी इज़ द वन ऑफ द इकनॉमी जहाँ पे प्रोड्यूसर्स सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स एंड फ्री मार्केट इकनॉमी रिस्पॉन्ड क्विकली टू द कंज्यूमर वांट्स. बेसिकली दिस इज़ द वन ऑफ द इकनॉमिक सिस्टम. फ्री मार्केट इकनॉमी respond quickly to consumer wants को रिस्पॉन्ड क्विकली करता फ्री मार्केट इकनॉमी.
like there are some disadvantage of the free market economy. There are some disadvantage, जो कि क्या disadvantage हो सकते हैं free market economy के system के. फर्स्ट डिसएडवांटेज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हार्मफुल गुड्स दैट इज़ नोन एज अ डीमेरिट गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस. Harmful goods that is known as a demerit goods because the producer always concerned about the profit, they never concerned how the society is affected. So it's mean like a demerit goods are overproduced, overconsumed, and over allocation of the resources in the society, and over allocation of resources in the society, harmful goods are overproduced, overconsumed, and over allocation of them in the society. Next disadvantage, free market obviously, but they pursue about the profit. Even when identified that they are concerned about the profit, they never concerned about the environmental factor. That's why harmful goods are produced in free market economy. Since the producer objective profit, they ignore the need of the poor. So it's mean like the main objective the main objective of the producer is profit. They might ignore the need of poor and only target rich audience, and only target rich audience from where high profit can be earned, can be earned, like they can generate high profit. Even guys, these are the one of the goods. अगर producer ने monopoly create कर लिए, तो इस mean like if a producer create a monopoly, अगर producer की monopoly है, monopoly is the one of the reason अगर producers a single producer है, अगर सिंगल प्रोड्यूसर है जिसकी डिमांड कौन सी है बेटा, इनलास्टिक डिमांड है, लाइक कोई कंपेटिटर नहीं है, इनलास्टिक डिमांड है, लाइक कोई कंपेटिटर नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे, किससे, फ्रॉम कंज्यूमर्स, हाई प्राइसेस चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर से बेटा हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे, और इवन रिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, आउटपुट, इन लास्ट डिमांड है, कंपेटिटर्स कम है, हाई प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, तो इट्स मीन लाइक प्राइसेस जो हैं उनकी सेलिंग प्राइस बहुत हाई होगी, और इवन दे आर द सम पीपल हु कंज्यूम लेस गुड बट द प्रोड्यूसर रेवेन्यू इज़ टू हाई. So it's mean like a monopoly is the one, a producer charge high prices from the consumers, a producer charge high prices from the consumers, and allocate resources inefficiently, that's why society bear loss, क्या करेगी बेटा, society bear loss. Even most of the production mainly rely on the capital intensive, के ऊपर प्रोडक्शन रिलाई होती है,
तो ड्यू टू विच डिमांड ऑफ लेबर फॉल, ड्यू टू विच डिमांड ऑफ लेबर फॉल, डिमांड ऑफ लेबर क्या हो जाएगा बेटा, फॉल हो जाएगी, और दैट क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकनॉमी, विच विल बी क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकनॉमी। तो इट्स मीन लाइक यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जो कि क्या क्रिएट करेगी अनएम्प्लॉयमेंट। इवन प्रोड्यूसर्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वालिटी गुड्स एंड चार्ज द हाई प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स। तो फॉर द सम कंज्यूमर इट इज़ अनएबल टू कंज्यूम दैट गुड which can create inflation. Producers produce high quality goods. Produce high quality goods. Produce high quality goods and charge high prices from the consumers and charge high prices from the consumers and charge high prices from the consumers, due to which मैंने बात की due to which for the some consumers, due to which some consumers are unable to purchase the goods, that can cause inflation, मैंने बात की इन्फ्लेशन लेके आ सकती है। तो बेटा हमने क्या सीखा, फ्री मार्केट इकनॉमी इज ओन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर, जिसका मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली ये इंटरप्ले करती है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ऑब्वियसली गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, मैक्सिमम हाई प्राइसेस पे प्रोवाइड होते हैं, और इवन कंज्यूमर्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर की वांट्स है उसकी प्राइसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। इवन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कंज्यूमर के पास वैरायटी ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं, इनोवेशंस आती हैं इस मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोड्यूसर लॉन्च करते हैं, बिकॉज इन रिटर्न ही इज़ गेटिंग अ मोर प्रॉफिट। Producer never compromise on the quality. They always provide a better quality or best quality of the product. और even this is the one of the economy जो कि consumer की wants fulfill करती है। Harmful goods, demerit goods over produce होता है क्योंकि producer concerned about the profit. Even producers always produce consumer want. They sometimes ignore the poor quality goods. इवन अगर कोई प्रोड्यूसर मोनोपोली क्रिएट कर ले, आज सिंगल सेलर है, कोई और दूसरा कंपेटिटर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात एक्सप्लॉइट कर सकता है मार्केट। प्रोडक्शन मेनली कैपिटल इंटेंसिव पे होती है, जिसके वजह से डिमांड ऑफ लेबर कम होती है, जो कि क्या क्रिएट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करता है और हाई प्राइसेस चार्ज करता है कंज्यूमर से, जिसके वजह से सम कंज्यूमर्स जो है फेस करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द इन्फ्लेशन। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आएगा फ्री मार्केट इकनॉमी।